प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को तिएनजिन पहुंचे। 7 साल से ज्यादा समय के बाद चीन की उनकी यह पहली यात्रा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य रूप से एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित होने वाले सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन में हैं। मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के तहत जापान से चीन के तिएनजिन पहुंचे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह चीन के तिएनजिन में उतर चुके हैं और एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्सुक हैं। कलाकारों के एक समूह ने मोदी का होटल में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति के साथ स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से रविवार को कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को पुनः संयोजित करने के लिए व्यापक वार्ता की। टेलीविजन पर प्रसारित अपने आरंभिक भाषण में मोदी ने कहा कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ा है। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा नीतियों पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए कहा कि दोनों देशों को बहुपक्षवाद को बनाए रखना चाहिए। 国际形势变乱交织，中国和印度是2大东方文明古国，是世界上人口最多的2个国家，也是全球南方重要成员。 The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are 2 ancient civilizations in the East. We are the world's 2 most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our 2 peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success. This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties.
Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations. मोदी और शी के बीच यह लगभग पिछले 10 महीनों में पहली मुलाकात थी। व्यापार और शुल्क संबंधी अमेरिकी नीतियों के कारण भारत एवं अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है। ऐसे में भारत एवं चीन के नेताओं के बीच यह मुलाकात महत्व रखती है। हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। See, cross-border terrorism was mentioned by the Prime Minister as a priority, and I would add that he did underline the fact that this is something that impacts both India and China, and that it's important, therefore, that we extend understanding and extend support to each other as both of us combat cross-border terrorism. And I would, in fact, like to say that we have received the understanding and cooperation of China as we have dealt with the issue of cross-border terrorism in the context of the ongoing SCO summit. Without going into the specifics, that the issue was discussed, it was raised by the Prime Minister, and he outlined his understanding very, very crisply and very specifically on this issue. As I said, he outlined the fact that this is a scourge that both China and India have been victims of, and India is still combating this menace. And he asked for China's support on this particular issue. And as I said, the Chinese have extended their support in various ways on addressing this issue. They both agreed that the two countries were primarily focused on their domestic development goals, and in this they were partners rather than rivals. It was also an element of consensus between them that a stable and amicable relationship between India and China can be to the benefit of the 2.8 billion people who live in the two countries. The common interests of the two countries outweigh their differences, and the two leaders also shared a consensus on the fact that differences should not be allowed to be turned into disputes. It was also understood that it is critical that India and China grow and cooperate if there is to be an Asian century and a functioning multipolar world order with a multipolar Asia at its heart. President Xi made 4 suggestions to further upgrade bilateral relations, namely to strengthen strategic communication and deepen mutual trust, to expand exchanges and cooperation, to achieve mutual benefit and win-win results, to accommodate each other's concerns, and finally to strengthen multilateral cooperation to safeguard common interests. And all of these were responded to positively by Prime Minister Modi. Well, essentially, it's to, if you look at what's happening in the space of global trade, for instance, or multilateral finance, for instance,
The understanding really is to do with addressing the deficit in global governance in these institutions that look after world trade or the multilateral financial architecture. Obviously, there is a deficit in how the WTO is working, for instance. There is even a deficit in how the United Nations is working at this point in time. These are obviously common interests for two countries such as India and China that are large actors on the international commercial, economic and financial stage, and therefore it is obvious for them to have a certain amount of understanding in strengthening these institutions that were originally tasked with looking at these issues.